वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं जी क्लाउड फॉर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन लैब। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब। इसके बाद हमारे पास ऐसा एक हाफ इंटरफेस खुल जाएगा। स्क्रॉल डाउन टू द टास्क वन। सो पहले आप नेटवर्क्स देख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, सबनेट्स को लिस्ट कर सकते हैं। सीधे आपको आ जाना है टास्क नंबर 4 पे। कॉपी दिस एंड इसे जाके नोटपैड पे पेस्ट करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट कमांड नहीं चल रहा है। सो आपको यहाँ से इसे इस तरीके से एडिट करना होगा सो दैट ये एक लाइन में आ जाए। Do it carefully, then copy this command and paste it here. Hit enter. अब इस कमांड में कौन सी चीज क्या कर रही है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड है, सो यू कैन read it for your learning purposes. Next, click check my progress, and it is complete. Now to the task 5, we have to view the 5 or rule details using this command. It is up to you. Now to the task 6, you have to copy this and again paste it in the notepad. अब हम इसे फिर से इस तरीके से एडिट करेंगे कि ये एक लाइन में आ जाए। Now copy this command and paste it here. Hit enter. This will create the private net deny firewall rule, and it is completed. Click check my progress. And congratulations, the lab is complete. If this was helpful for you, give it a like and subscribe our channel for more such videos. Now you can just simply end this lab by clicking here and click end lab.